नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अनन्या एकेडमी में बहुत स्वागत है। आज हम बर्थडे पार्टी कंक्लूजन को शुरू करने वाले हैं और जैसे जानते हैं यह टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड है एलटी में और जीआईसी में। तो अभी तक के वीडियो मैंने जो है आपको पढ़ाया कि व्हाट इज द प्ले, हाउ द प्ले बिगिंस, how there is a brainwash in Stanley who is a protagonist। और इस प्ले को मेरे पढ़ाने का यही मकसद था कि आप इस टेक्स्ट को पढ़िए, इस टेक्स्ट को एंजॉय करिए और देखेंगे कि हाउ जब टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, थीम, कैरेक्टर, मेजर लाइंस, जो कि एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन इससे उठ सकते हैं। और एलटी मेंस में जैसा आप देखेंगे कि उसमें फिर आपको कंप्रेहेंसिव वाले जो आंसर हैं जो आपको मेंस में लिखना है वो भी आ जाएगा। तो और आपको कोई जानकारी लेना है तो हमारे नंबर हैं 8090988430, 8601444126 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका कंक्लूजन पढ़ाने जा रहा हूं और कंक्लूजन में आप देखेंगे जब कंक्लूजन में हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि कंक्लूजन में हम देखेंगे कि दिस प्ले इन दिस प्ले आई वांट टू टेल यू अबाउट द फाइनल सीन ऑफ द प्ले, that how the play in fact ends, and you see that when you read that this is what they say, that I want to take Monty I want to take Monty to doctor. This is what he says, that PT says that you are going to take him a doctor. Now who is this doctor? A doctor शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, and this doctor is a psychological symbol, right? Psychological symbol. It seems that Stanley is suffering from such types of disease. And this is the problem of, you see, that 20th century drama. If you read Peter Shaffer, or if you read, for example, Peter Shaffer's Equus, or there is a book by One Flew Over the Cuckoo's Nest, written by Ken Kesey. You also find in this play that there is a psychological disturbance, which means that the men of this generation, 20th century reality, is that they are psychologically tortured, right? और यही प्रॉब्लम होती है कि कैसे एक इंसान, कैसे 20th सेंचुरी में किसी व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल टार्चर किया जा रहा है, राइट? ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो साइकोलॉजिकल टार्चर की बात है, यह जो है हमारे बर्थडे पार्टी मिलता है। आप इस प्ले को जब पढ़ेंगे, एलटी मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि राइट द थीम ऑफ द बर्थडे पार्टी, या पूछ सकता है कि व्हाट इज द कोर इशू ऑफ द प्ले, तो आप यही दिखाएंगे, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टिंक्ट, राइट? सोशल हायरार्की, सोशल इंस्टिंक्ट that are represented by the two persons, not familiar, unfamiliar guests. They have not been invited, they are coming and they are Goldberg and McCann. और मैकान कहता है कि हम इसको मोंटी के पास ले जा रहे हैं। मोंटी इज डॉक्टर, क्या करेंगे डॉक्टर के पास ले जाकर के? दैट इज द प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई इफ यू रीड मिशेल फूको, आप लोग इसको पढ़िएगा तो उसमें मिशेल फूको की थियरी लगा सकते हैं। मिशेल फूको ने पूरा अपना जो काम किया था, इनफैक्ट वो बहुत बड़ा थिंकर था, उसने एक किताब लिखी थी, वो था द बर्थ ऑफ, उसने किताब लिखा था द बर्थ ऑफ क्लिनिक, राइट? द बर्थ ऑफ क्लिनिक। और ये उसकी पूरी 20th सेंचुरी की किताब, 18th सेंचुरी पे उसका लिटरेचर था। तो आप देखेंगे कैसे जो है बर्थ ऑफ क्लिनिक, कैसे उसको जो है एक प्रोटेगनिस्ट को ले जाएंगे डॉक्टर के पास, राइट? तो देखेंगे मैकान, और फिर जो है इसके आगे देखेंगे मिसेज बोल्स हैज गॉन आउट टू गेट समथिंग नाइस फॉर लंच, दैट्स राइट, अनफॉर्चुनेटली we may gone by then. Petty, will you be? By then we may be gone breaking in. You know that girl. What girl? तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि they are taking him to a doctor. और this word doctor is very symbolical, which means
if you don't follow the order of 20th century modern thinking, 20th century modern establishment that is represented by the two persons, two guests, they are the symbol of establishment, then you will be tortured, you will be taken away, and you don't have any option except to surrender yourself. If you don't surrender willingly, then you will be forced to surrender. यदि आप अपने आप सरेंडर नहीं करेंगे तो आपको फोर्स किया जाएगा. एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस प्ले. कि देखिए यही होता है कि किसी को मार देना, ये तो उसके और ये देखेंगे कि एट वन स्टेज दिस प्ले इज अ ट्रेजेडी, देयर इज अ ट्रेजिक एंड, दिस इज अ पैथोस. Entire dream of Meg is that she wants to in fact celebrate the birthday party for Stanley, but that was her dream, right? And her dream is not fulfilled. So most all the characters, they could not fulfill their dream. There is the problem. This is the tragic aspect of reality. कि वी आर डिस्टर्बिंग दैट पर्सन, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, मेंटली उसको हैरेस कर देते हैं और मेंटली टॉर्चर कर देते हैं ना. तो यही देखेंगे. दे आर टेकिंग टू स्टैनली, आई एम स्पीकिंग टू मिस्टर गोल्डबर्ग, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी बैक. ही एग्जिस्ट, गोल्डबर्ग rises, goes to the window, etc. Just I want to skip some of the line, and then she says that Goldberg interrupting, I don't know why, but I feel knocked out. I feel a bit. It is uncommon for me. McCann, is that so? It is unusual. And this is something that says that, what did you call me? Goldberg opening his eye regarding McCann. What did you call me? McCann who? Murderously, right? Now there is also this word, murderously. Don't call me that. He seizes McCann by the throat. And there is, never call me that. Now this is the menace. He seizes McCann by the throat, right? So seizes McCann by the throat, and this is the you see that this is the symbol of modern threat, right? Modern threat. And that this is comedy, right? So there is a menace, there is a comedy. So comedy of menace. Sometimes there is a laughing, but there is a menace, and this menace is a psychological menace, right? So you say that what do you mean? Why not? You said, I never said that. From the floor to the room at large, who said that? I never said that. I'll go up now. He jumps up and rushes to the door left. Goldberg wait. His arms to the arms of the chair. तो यहां तक पढ़ने के बाद मैं दिखाना चाहता हूं कि जब गोल्डबर्ग मैककान की बात नहीं मानता है तो मैककान इनफैक्ट ही सीजन मैककान गोल्डबर्ग की बात नहीं मानता, आपस में ही लड़ जाते हैं, राइट? एंड यू सी दिस इज द प्रॉब्लम दैट honest to God, just a question, and they say that McCann approaches him very slowly. That's why I have reached my position, McCann, because I have always been as fit as fiddle. All my life I have said the same, play up and play the game, honor thy father and mother, etc. This is absurdist line. There is, because I believe that the world is desperate, and you will find that what I say is true, because I believe that the world beckon, etc. Now I am coming the final section of the play, and this will be my last video for the interpretation of the play. इसके बाद हम आपको टेक्स्ट की कुछ मेजर थीम वगैरह बताएंगे. So then says that Uncle Bernie will see you, etc. Then says that I have reached my position, McCann, because I have always been as fit as fiddle. And then McCann at the door, I'll give him 5 minutes, he exists. Goldberg, come over here. What is going to happen? Come over here. Thank you. What's the matter? You go to the needle to Uncle Nettie. Have a game of Pontoon first. And this is the last session that he said. I think I like all the other girls. Goldberg, McCann. And then Lulu comes. Lulu is she is the mediator. She is like not met, but she is a typical English class girl, and who sometimes come to entertain Stanley, sometimes come to inform certain things, right? So that is how Lulu, and you know there is no exact relationship in Pinter's plays. This is the 20th century reality. So he says that kiss Goldberg, who opened the briefcase, me or you, Lulu? Lulu, with growing anger,
You used me for a night, a passing fancy. Who used who? You made use of me when my deafness were down. Who took them down? That's what you did. You quenched your ugly thirst. You taught me things a girl shouldn't know before she had been married at least 3 times. Right? This there is a sexual connotation. You can say that. But today, Lulu, with growing anger, you used me for a night, a passing fancy. Who used who? You made use of me when my deafness were down. And Lulu, that's what you did. You quenched my ugly thirst. You taught me things a girl shouldn't know before it. So that there is sexual connotation that you don't have to keep in mind. But Mekan sagely confess. Lulu confesses what? Mekan, down your knees and confess. Now this confession means accept the reality, accept system. Right? This is what Mekan says. Confess means accept system. मतलब सिस्टम पे विश्वास करिए, सिस्टम को आपको स्वीकार करना है. You have to accept the system. Mekan down on your knees and confess. And then Mekan कहता है कि confess करो. तो सेम प्रॉब्लम यही होती है जो स्टैनली के साथ होती है, वही लुलू के साथ होता है. मतलब कि यदि आप 20th सेंचुरी सिस्टम को नहीं मानेंगे, जिसको कि मैकान और गोल्डबर्ग रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि संभवतः हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है, विच इज वेरी डेंजर टू इंडिविजुअल सोसाइटी. तो इसका एक ही प्रोसेस है, यू विल बी टार्चर्ड बाय सिस्टम. सिस्टम इज वेरी पावरफुल. यही बताने का सिस्टम प्रयास पिंटर कर रहे हैं कि सिस्टम इज वेरी पावरफुल. हम उस सिस्टम से जीत नहीं सकते. राइट? हमें उसके अंदर रहना है. What does he mean? Goldberg confess. What can you lose? Lulu, what to him? He's only been on a frock 6 months. Kneel down, woman, and tell me the latest. I have seen everything that's happened. I know what is going on. I have got a pretty shrewd idea. I have seen you hanging about the rock of castle, profaning the soil with your going on. Out of my sights I am going. Mekan goes to the door, left and goes out. He ushers in Stanley, who is dressed in dark, well-cut suit. Now, Stanley's dress is also changed. So that this is, he says that, and white collar, and holds his broken glasses in his hand. तो लास्ट में हम देखते हैं कि स्टैनली हु इज ड्रेस्ड इन डार्क वेल कट सूट, डार्क वेल कट सूट पैजामा, व्हाइट कलर एटसेट्रा. And then Goldberg, how are you stand? Pause. Are you feeling any better? What is the matter with your glass? फिर ग्लास आ जा रहा है. ग्लास इज अ सिंबल ऑफ विजन. राइट? बार बार यहाँ पे ग्लास आ रहा है. Glass which is a symbol of vision. Goldberg bends to look. A pity they are broken. तो बाद में देखते हैं कि उसका जो ग्लास है वो ब्रोक किया जाता है. और दिस ग्लास, आप जब इस प्ले को लिखेंगे तो जब इस पे आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको लिखना है कि द ग्लास इज अ सिंबल ऑफ ब्रोकन, ऑफ डिजायर. दिस ग्लास इज अ सिंबल ऑफ Stanley's wish, Stanley's dream, which is completely broken. And then Stanley stares blankly at the floor. Right? He looks better, doesn't he? Much better. Goldberg कहता है a new man. Right? They say that a new man. You know what we will do? What? We will buy him another pair. उसके लिए हम अलग चश्मा खरीद देंगे. Means उसका विजन हम चेंज कर देंगे, उसको हम एक नए रूप में ढाल देंगे. This is what this is. कि यदि आप उनके नियम को नहीं फॉलो करेंगे, उनके रूल को नहीं फॉलो करेंगे, जो कह रहे जिसको आप नहीं मानेंगे, तो what will be the result? The result will be that you will be forced. You will be, they will force you. He remains with no movement where he sits. Mekan out of our own pockets. It goes without saying between you and me, Stanley. It is time you had a new pair of glasses. कहता है अब आपको नया चश्मा मिल जाएगा. Mekan, you can't see straight. Goldberg, it's true. You have been cooked for years. Now you are even more cooked. He's right. You have gone from bad to worse. Worse than worse. You need a long convalescence. A change of air. कहता है कि फिर तुम्हें दवा की आवश्यकता है. तुम मेंटली पागल हो गए हो. और एग्जैक्ट में मेंटली पागल इसको कौन किया है?
इसको दोनों लोग किए हैं। फिर क्या कहते हैं, मैकान कहता है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये लाइन आती है इसमें, इसी में एक किताब लिखा था एम फास्टन ने। मैकान कहता है गोल्डबर्ग एग्जैक्टली यू आर एन रट, यू लुक एनेमिक, रूमेटिक, मेयोपिक, इपिलेप्टिक, ये सारी चीजें कहता है। यू सीम्स लाइक इपिलेप्टिक, यू सीम्स लाइक मेयोपिक, यू आर ऑन द वर्ज, मतलब आप पागल हो गए हो, ऐसा लगता है कि आपको मिर्गी आती है, ऐसा लगता है आप बीमार हो गए हो, सर्टेन इस तरह की बातें कहता है। यू आर ऑन द वर्ज, यू आर डेड डक, बट वी कैन सेव यू फ्रॉम वर्स फेट। गोल्डबर्ग ट्रू, मैकान अनडिनाइबल। वो कहता है कि हम आप ऐसा लगता है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा लगता है कि तुम डिस्टर्ब हो गए हो, और हम तुम्हें इस पागलपन से बचाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। किस पागलपन से आप बचाएंगे, राइट? पागल तो आपने उसको किया, and this is the tragedy, right? And then says that from now on we will be the hub of your will, we will renew your season ticket, we will take the pence of your morning tea, will I give you a discount on all inflammable goods, we will watch over you, advise you, give you proper care and treatment, कहते हैं आपको हम अच्छे ट्रीटमेंट देंगे, let you use the club bar, keep a table reserved, help you acknowledge the fast days, bake your cakes, help you kneel on kneeling days, give you a free pass, take you for constitutionals, give you hard tips, we will provide the skipping rope, the ointment, the finger stall, the abdomen belt, etc. ये सब चीजें आपको देंगे। The prayer wheel, the plaster of Paris, the crash helmet, the crutches, a day and night service, all on the house, that's all, that will make a man of you. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहता है, we will make a man of you and a woman, you will be reoriented, you will be rich, you will be adjusted, you will be our pride and joy, you will be men's, you will be success. ये सब लाइन याद कर लीजिएगा। बार बार कहते हैं कि मैं आपको रीओरिएंट कर दूंगा, नए तरीका से बनाऊंगा, आपको नई चीजें दिखाऊंगा, आप नया बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन नटसेल फाइनली जब इस प्ले को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस प्ले में क्या होता है। एग्जैक्टली इस प्ले में आप एक दो चीजें देखेंगे कि कैसे ये दोनों कैरेक्टर गोल्डबर्ग और मैकान आकर के इस व्यक्ति को परेशान करते हैं, इसको इसके ऊपर जबरन अपना सिस्टम थोप रहे हैं, अपने विचार को थोप रहे हैं। एंड सी दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, एक टर्म मैंने पहले बताया था कि हाँ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर आया था, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें दो सिविलाइजेशन का क्लैश हुआ था, एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ द कोल्ड वॉर। और बार बार मैं कह रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दिस प्ले इज सेंटर्ड अराउंड द कोल्ड वॉर सिचुएशन, यू विल बी आवर प्राइड एंड जॉय, यू विल बी मेंस एटसेट्रा। फिर कहता है समथिंग लाइक दिस, यू विल गिव ऑर्डर्स, यू विल मेक डिसीजंस, you will be a magnate, a statesman, animals, etc., etc., etc. Stanley begins to clench and unclench his eyes, sure it is a prospect. Hands clutching his glasses begin to tremble. What's your opinion of such a prospect? Hey, Stanley concentrates, his mouth opens. He attempts to speak, fails, and emits sounds from his throat. Oh, go, 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 on the breath, kaka. They watch him, he draws a long breath which shudders down his body. He concentrates. Well, Stanley boy, what do you say? Yeah, he concentrates. He lowers his chin, draws into his chest. He catches. Stanley, go, go. What's your opinion, sir? Ka, ka, ka. Same repetition of the same first line. Stanley's body shudders, relaxes. His head drops. He becomes still again. Stop. Petty enters. तब Petty आता है. You know, Petty is the main. Petty knows everything. So this is what I want to tell you, that Petty knows everything. So he says that he can stay here. Goldberg, don't be silly. Petty, we can look after him here. तब जो है बाद में पेटी कहता है, he is my guest, he needs special treatment. तो बाद में, as I told you earlier, and again I am saying that Petty is the close observer of our situation. He knew what is happening. Right? This is very important, that Petty knows everything. कि क्या उसके साथ हो रहा है, कौन सा अन्याय उसके साथ हो रहा है, दिस फैक्ट इज नोन बाय नन अदर देन पीटी। दैट्स व्हाट ही सेज, दैट यू आर टेकिंग हिम टू मोंटी, ही कैन स्टे हियर। पेटी कहता है कि यहां रह सकता है, गोल्डबर्ग कहता है कि आप उसको मोंटी के पास, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, व्हाई आर वेयर आर यू टॉकिंग हिम, कहां ले जा रहे हैं, टेकिंग हिम।
we can look after him here. Why do you want to look after him? He is my guest. पेटी कहता है he is my guest, मेरा अतिथि है. He needs special treatment. गोल्डबर्ग कहता है he needs special treatment. We will find someone. Mr. Monty is the best. There is a bring him a can. Stanley out of the chair. They all three moved towards the door left. बेटी कहता है leave him alone. So Petty is very sympathetic towards Stanley. और अब मैं पहले बताया था फिर बता रहा हूं कि Petty is the person who knew everything very well. So the Petty they stop. Goldberg studies him. Goldberg insidiously, why don't you come with us, Mr. Bowles? Why don't you come with us? Come with us. हमारे साथ आओ. To Monty. Monty के पास चलते हैं. There are plenty of room in the car. हमारे कार में बहुत जगह है. Petty makes no more. They pass him and reach the door. McCann opens the door and picks up the suitcase. Petty broken. और ए लाइन बहुत जरूरी है. पेटी बाद में कहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा. पेटी ब्रोकन टूट कर कहता है, स्टैनली डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू. और दिस इज द वार्निंग लाइन एंड दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब भी प्रिंटर को करिएगा इससे करिएगा. दिस इज अ वार्निंग. दिस इज व्हाट ही सेज. पेटी सेज दैट don't let them tell you what to do. Don't let them tell what is your future course of action. Keep yourself secret. Don't cooperate them don't involve in their system. Keep yourself safe. Keep yourself alone. This is what Petty says. Broken. His heart is broken. They exist. Silence. Petty stands. The front door slams. Sound of car starting. Sound of car going away. Silence. Petty slowly goes to the table. He sits on a chair. Left. He picks up the paper and opens it. Same repetition of the same. It was as it was earlier. And Petty studies the front page of the paper. Petty फिर पढ़ने लगता है. मैं coming down stage. The car gone. Petty yes. Have they gone? Yes. May won't they be in for lunch? No. May कहता है what is same? She puts her bag on the table. It is hot out. She hangs her coat on a hook. What are you doing? Petty reading. Meg is it good? All right. Sits by the table. Where is Stan? He stand down at Petty. No, he is. Is he still in bed? Yes, he is still asleep. Meg still he will be late for his breakfast. Let him sleep. Still Meg is living in a dream. And however, उसको मालूम नहीं है कि स्टैनली को गोल्डबर्ग और मैकान लेके चले गए हैं. सो दिस इज व्हाट ही सेज दैट पेटी आई वाज नॉट देयर. वरंट यू देयर? आई केम इन आफ्टरवर्ड्स. मैं गोवा पाज. इट वाज अ लवली पार्टी. और बाद में दिस इज द पॉइंट दैट शी सेड दैट इट वाज अ लवली पार्टी. राइट. स्टिल मैग इज लिविंग इन अ स्टेट ऑफ ड्रीम. मैग इज लिविंग in a state of dream world, illusion. So you should have been there, Petty. It was good. Pause. Meg, I was the belly of the ball. Petty, were you? Oh yes, they all said I was. That is what Petty कहता है, क्या तुम थी? And you know that in the party Petty was not present. So Meg says that I was the belly of the ball. Meg, oh yes, they all said I was. I bet you were too. It is true. Pause. I was. I know I was. And curtain. And that's how the play ends. So finally, what you find when the play ends? क्या आपको इस प्ले को पढ़ने से मिलता है? That you should know. Number one, that this play is an absurdist play. क्वेश्चन जो उठेगा एलटी में कि describe birthday party as the play of theater of the absurd. Yes, this is the play that is associated with the theater of the absurd. theater of the absurd एक मूवमेंट था जो कि बहुत एक्चुअली 2 वर्ल्ड वॉर के बाद आया. सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, आइनेस्को का द चेयर्स, जॉ गेनेट, टॉम स्टॉपर्ड ने एक प्ले लिखा है जो कि हैमलेट का थिएटर ऑफ द एब्सर्डिस्ट वर्जन है. गिल्डस्टन एंड रोजेनक्रेंट्ज आर डेड. तो तमाम आपको प्ले मिलेंगे, लेकिन इस प्ले में यस कुछ मूवमेंट है पिंटर का, सैमुअल बेकेट का, और इस बात को पिंटर ने क्लियरली एडमिटेड. पिंटर हैज क्लियरली एडमिटेड
that he had the influences throughout his life of none other than Samuel Beckett. This is what he believed, that the greatest influence that he had is of Pinter. This is absolutely true कि पिंटर का जो है इन्फ्लुएंस उनका रहा है. पॉइंट नंबर फर्स्ट. सेकंड, तो इस तरफ आप देखेंगे तो दिस प्लीज थिएटर ऑफ द एब्सर्डिस्ट. आप थिएटर ऑफ द एब्सर्डिस्ट मूवमेंट को दिखाएंगे. एक किताब लिखा है जिस थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, वो थी मार्टिन एस्लिन. मार्टिन एस्लिन ने एक बुक लिखा था. मार्टिन एस्लिन, उनके किताब का नाम था द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. दैट वाज हिज बुक. ये उनकी किताब थी. उस किताब को आप लोग जरूर कोट करिएगा. लेकिन इन सब के बाद इस प्ले में और क्या है? बट विद इन द थिएटर ऑफ द एब्सर्डिस्ट मूवमेंट देयर इज व्हाट वी कॉल सर्टेन मीनिंग, सर्टेन रियलिटी. कुछ इसमें रियलिटी भी है. और आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या रियलिटी है. तो रियलिटी है नंबर 1, the problem of late 20th century generation. This is called postmodernity. Really this play is postmodernist. There is a tendency of postmodernist. Postmodernism की आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें there are certain books. लिंडा हसियन ने बुक लिखा है The Politics of Postmodernism, The Politics of Postmodernism, Cultural Logic of Late Capitalism as Frederick Jameson says. Postmodernism एक चैप्टर भी आपके सिलेबस में है, GIC में भी है, LT में है, तो वो आप देखेंगे. उसके बाद आप देखेंगे कि दिस प्ले, तो आप बैक में जाएंगे यदि, तो आप देखेंगे दिस प्ले हैज देयर इज अ मेन पॉइंट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल आर्डर एंड सोशल इंस्टिंक्ट. इसको जरूर आप दिखाइएगा कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल आर्डर एंड सोशल इंस्टिंक्ट. वर्सेस सोशल इंस्टिंक्ट. बस सोशल इस्टेब्लिशमेंट आप लिख सकते हैं. यू कैन राइट सोशल इस्टेब्लिशमेंट. हाउएवर व्हाट इज दिस सोशल इस्टेब्लिशमेंट? सोशल इस्टेब्लिशमेंट है क्या? हायरार्की, पावर, अथॉरिटी विच इज अनार्की, विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, which is not beneficial for individual being. एक किसी इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है. and they are forcing to accept your reality. हमको जबरदस्ती हमारे ऊपर जबरन कोई चीज थोपा जा रहा है और हम मजबूर हैं. we are compelled to accept that reality. हमें वो रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा. दिस इज द अनदर प्रॉब्लम ऑफ 20th century literature. जिस दौरान पिंटर लिख रहे हैं कि आखिर गोल्डबर्ग और मैकॉन क्या चाहते हैं. स्टैनली सेफ है. स्टैनली वो छिप कर रहना चाहता है, वो समाज से नहीं जुड़ना चाहता. क्या हो गया समाज को? एंड ये हॉरर है. दिस इज द हॉरर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. कि क्या हुआ आखिरकार? युद्ध हुआ, परमाणु युद्ध हुआ, अमेरिका ने मार दिया और पूरा नागासाकी और हिरोशिमा जैसे 2 शहर नष्ट हो गए. अल्टीमेटली क्या मिला? युद्ध से क्या मिलता है? So this play tells the consequences of the war. कि आखिरकार युद्ध से हमें क्या मिलता है? We get nothing. That is the problem. और उसका प्रभाव जनरेशन तक चलता रहता है. आज भी आप देखेंगे जापान में तो वहां के बच्चे आज भी लंगड़े और लूले पैदा होते हैं. That is the reality of the play. So Stanley is the representative of the post World War youth. Like जैसे आप देखेंगे कि जॉन ऑसबॉर्न का प्ले है लुक बैक इन एंगर, जिम्मी पोर्टर. Same you find here. That person is the representative of angry young man. गुस्सा है, नौकरी नहीं मिल रही. जैसे अमिताभ बच्चन का फिल्म है दीवार, जंजीर, लाइक जंजीर. अनएम्प्लॉयड यूथ क्या करे? पैसा नहीं है, शादी हो गई है, नौकरी करना है, नौकरी है नहीं, दे आर अनएम्प्लॉयड. दैट इज द प्रॉब्लम. तो ठीक है, बट और ये प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर दिस प्ले, पिंटर्स प्ले में क्या स्टैनली की प्रॉब्लम है कि बेचारा अकेले रह नहीं सकता. यू कैन नॉट सर्वाइव योर इंडिविजुअल लाइफ. You will be forced to accept certain external forces, and that's what the Goldberg and McCann say in the play. They are continuously forcing Stanley that you have betrayed an organization.
You have betrayed an establishment. You are traitor. You should be the part of organization. But the tragic aspect of the play is, this is the pathetic point, that which types of, that it is not clear about the order, that which types of order they are talking, which types of social instinct they are talking. There is a possibility of social instinct. आखिरकार ये सोशल इंस्टिंक्ट है क्या, इसका क्या मतलब है, हम कैसे सोशल इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, सोशल इंस्टिंक्ट का होना बड़ा मुश्किल है. सो दे आर नॉट फॉलोइंग सोशल इंस्टिंक्ट. तो समाज की जो एक व्यवस्था है वो व्यवस्था टूट गई है. एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड दैट सिगमंड फ्रायड एंड कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक नीत्शे एंड मोस्ट ऑफ द 20th thinker, they say that God is dead. This is what Friedrich Nietzsche says, that God is dead. Martin Heidegger, it was said by, this was proclaimed by Martin Heidegger earlier. But the point is that this plays the complete reversal of the earlier ideas, like Kant, like John Locke, Enlightenment theory. Or if you go to Renaissance में जाएंगे, like when you read Shakespeare's plays, most of the Shakespearean plays like Hamlet, Macbeth, and Othello, what you find? You find that there are certain logic, there are certain theory, there are certain system, and that's what Pico della Mirandola, he has written a book called Oration on the Dignity of Man, which is called the Manifesto of the British Renaissance, Manifesto of the English Renaissance, where he says that man is free to do whatever he can do. Therefore, he is placed in between. Right? He can either he can go up or he can come down. There is no bound. There is no compulsion. There no force. You are free. And this is what Hamlet says, that there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. That's what you see, that this is what John Milton also says in Paradise Lost, that it is up to our reason to go. Either we can go up or we can go down. And this is what Satan says, that even to better to if I want to live in a hell, in a state of freedom, that is good. So if we are living in a captivity, if we are in a captive, and if we are living in a heaven, it is not better for me. Therefore, Satan says that it is better to live in a hell in a state of freedom. So complete freedom was the main focal point for the Renaissance. But here there is no freedom at all. Hardly you find any freedom. So freedom is the crux of human life. हर इंसान एक स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहता है. The problem is that Stanley cannot live a free life. He is forced, he is compelled by certain power, certain logic, and this is what the characters like individual order, that is represented by the Goldberg and McCann. Basically in the third act, in the act second, you find that there is a brainwashing. They are washing the brain of Stanley, and that's how you can quote certain answers, certain lines of the play, that you have betrayed organization. And this is what happens, that they are saying 2 or 3 things. You are rheumatic, means that you are completely disturbed, you are mentally patient, you are myopic, you are epileptic, you are on the verge, you are a dead duck, but we can't save you from a worse fate, true, undeniable. The language is nonsense. The structure of the play is theatre of the absurd. The language that is used is like absurdist, but within the absurdist tendency there is certain meaning, and this is Pinter's humanism. So you can study this play as a humanistic point of view, right? There is Pinter's humanism. So you can also understand this play as a humanistic play. This play as a humanistic play, right? This play as a humanistic play. So that is another point, that the theme, basically if you read the theme, that is the social order and versus individual instinct. That is another point, right? Social order, hierarchy.
If you read Pinter's plays, then there you find that there is a hierarchy, there is social order, there is establishment. There are certain books that has been written, like Mel Gusso, Conversation with Pinter. Like there is Michael Billington, who has written a separate biographical book on Pinter, right? That is available in internet. So you can quote Michael Billington also, where he says that who says that these are characters, they are monster, right? Sometimes it is also says that the characters of Goldberg and McCon, they are monster. They are monster. They are traitor. They are treacherous person. So that is how you can find when you read this play, that they are traitor, they are treacherous, they have come to betray a certain types of individual character. And then Goldberg says that you need a long remedy. Convalescence means that you need a doctor. You are diseased. You need a medicine, right? But it is not clear which types of medicine they are talking about. So if you want to read, so that's what I want to tell you, is that finally when you read this play, you find that this play involves certain types of logic, certain types of theory, and which is the core point of the view. And that's how, if you read this play, you find that have you got anything to confess? What? McCann savagely confess. Lulu confess what? McCann down on knees and confess. They are not only forcing Stanley, but they are also forcing Lulu. That confess, a passing fancy, leaving, and whatever happened, it was pure with him. He said that time of health. You go to the needle to Uncle Nettie. I am going. Have a game of pontoon first. Forwards man sake. Blow in my mouth. Goldberg mouth. And then she says that intensely with growing certainty. My father said to me, Benny, etc., that you don't have to read, but just understand that McCann, because I have always been as fit as a fiddle, all my life I have done this. He seizes McCann by the throat. So there is a menace. There is a threat. Even Goldberg also seizes McCann. And the last line of the play, just you should quote, because देखिए किसी भी मेंस में आंसर लिखने के लिए आपको कोटेशन जरूरी है. टेक्स्ट का आप कोट करेंगे तो निश्चित तौर पे आप आंसर लिख लेंगे, राइट? तो यही कहता है कि that's understandable. You can quote who is going to take the tickets. All these things are there. और बैक करके तीनों एक्ट को आप सही से पढ़िएगा. तो प्ले शुरू होता है कैसे, प्ले एंड्स होता है कैसे, बीच वाला जो सेशन है, बीच वाला जो सीन है, दैट इज एक्ट 2. This is very crucial scene. And there's a cross question, that that McCann and Goldberg, they are questioning cross questions. So many questions they are posing. That you are a traitor, you have betrayed an organization, egg came first or chicken, like existentialist problem. जापा सार्थ, another theorist आप नाम लिख सकते हैं, जापा सार्थ, or you can say that you can, but you will have to be the part of system, you will have to be the part of establishment. And that's why you know that when you read Japa Sartre, he rejected Nobel Prize. Conformity, you must conform yourself. But the point is this, that non-conformity is the existence of all art. Non-conformity. Non-conformity is the existence or crux of human life. An artist, एक आर्टिस्ट का जो सबसे बड़ा चीज है वो है नॉन कन्फर्मिटी. हम कन्फर्म नहीं करेंगे, हम फ्री रहना चाहते हैं. वी वांट टू बी फ्री.
However, system what system wants to do? System wants to make me a captive, a conformative person. और this is the problem of 20th century reality. अभी अभी रशिया यूक्रेन में वार हुआ, प्रॉब्लम क्या था? सेम वही प्रॉब्लम है, बिकॉज यूक्रेन को रशिया ने कहा कि आप नाटो का पार्ट न बनिए, बट अमेरिका ने कहा कि, और प्रॉब्लम क्या हुई कि वो नाटो का पार्ट बनना चाहता था। प्रॉब्लम हैपेंस। तो जो बिग पावर है, सुपर पावर है, वो जो छोटे जो खास तौर से जो जिसको हम कह सकते हैं जो कमजोर वर्ग है, उसको परेशान करना चाहते हैं। माइट इज राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने थियरी दिया था, माइट इज राइट। उसने कहा माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। और उसने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज राइट। ये सारी चीजें इसमें दिखाई पड़ती हैं, कैसे पावर डायनामिक्स, कैसे पावर पॉलिटिक्स, राइट। Goldberg lights his cigarette, etc. So there is nonsense, there is comedy, there is tragedy. Tragedy in not the sense that you have read in Hamlet or Macbeth. There is a physical killing, rather there is a mental torturing. तो एक चीज समझने की बात है कि आपको कोई पागल बना के छोड़ दे और आप पूरी जिंदगी पागल रहे, इससे तो अच्छा है कि आपको जान से मार दे। That's you. This you find in this play. Ultimately, they take Stanley to Monty. Monty is a doctor. So that person is psychologically dead. पागल बना के छोड़ दिया, क्रेजी किया रे, एक गाना आया था, right? So this is the problem. That is what we call third level. That Stanley is completely mentally tortured. Mentally torture हो गया है, उसको ये लोग इतना परेशान कर दे कि मानसिक रूप से बीमार हो गया। And this is that you find in One Flew Over the Cuckoo's Nest by Ken Kesey. Or you also find in Peter Shaffer's Equus. Peter Shaffer has written a play called Equus. तो इन सारे चीजों को जब आप समझेंगे, जब आप पाएंगे, तब इस प्ले को अंडरस्टैंड करेंगे। और इस तरह से लिखिएगा, कोटेशन दीजिएगा, सम इंटरटेक्चुअलिटी आप लिखिएगा, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। Of course, he is coming down and then I'll go to the shopping. So he goes to Mr. Goldberg want with a wheelbarrow. बाद में कहता है there is a wheelbarrow. Stanley usually etc. Petty does not answer. It is probably broken in the party. Their glass is broken. बार बार इस प्ले में सिंबल आ रहा है, their glass is broken. They need new glass. What is glass? This glass is a symbol of vision. So they said that their glass is broken, right? This is a symbol of their vision. So say that their glass is broken, right? And then says that how are you then this morning? I have got a splitting headache. तो 3 एक्ट में प्ले लिखा गया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसका लैंग्वेज कठिन नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसका थीम बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैंने कहा कि बर्थडे पार्टी पिंटर, वो आपका एलटी मेंस में भी है, जीआईसी में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो है ही। तो पिंटर का जो बर्थडे पार्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, और इसको जरूर पढ़िएगा। ये यूजीसी नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हर जगह प्रिस्क्राइब्ड है। दिस प्ले इज प्रिस्क्राइब्ड एट एवरीवेयर across the world in every university, और it is a representative play of the post modern sensibility. जो post modern sensibility है उसका representative play है। तो इस प्ले को हमें इस तरह से पढ़ना है, right? It says that on their knees Stanley there is a sharp silence grunts from McCann and Goldberg. Where is your torch? Pick up your torch. Torch रात को दिखाते हैं ना, night scene. It seems that there was no light at that time, right? He said, come on everyone, rising, McCann, Stanley, Meg Stanley, she said that. And then she said that, make my little room was pink, I had a pink carpet and pink curtains. And I had musical boxes all over, make my little certain things like this, piggyback, roll map, pickled. So that's how I want to finish this play. तो अब मैं इस प्ले को यहीं पे फिनिश करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि इस प्ले को जितने भी मैंने अभी तक थियरी बताया, जो मैंने लॉजिक बताया, किस तरह के क्वेश्चन उठ सकते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्ले, इसको पढ़िएगा। होप यू विल गेट गुड मार्क्स इन मेंस इफ यू अटेम्प्ट द वे आई टॉट यू। थैंक यू।